हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आलोक मिश्रा एंड वेलकम बैक टू द महादेव अकेडमी। हम लोगों ने 3 चैप्टर क्लास 12th बायोलॉजी के ख़त्म कर दिए थे। एक और चैप्टर हम लोग का आ गया है प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें हम लोग जीन्स जेनेटिक्स के बारे में डिटेल्ड में पढ़ेंगे कि जीन क्या होता है, जेनेटिक क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। Have you ever wondered why the elephant always gives the birth only the baby elephant and not some other animals? Why a mango seed form only a mango plant and not any other plant? कि कोई भी स्पीशीज़ है वो सेम स्पीशीज़ को ही क्यों आगे ट्रांसफ़र करती है नेक्स्ट जनरेशन में? Given that they do are offspring identical to their parents, or do they show difference in some of their characteristics? How you ever wondered why the siblings sometimes look so similar to each other? siblings जो होते हैं वो so similar एक दूसरे के क्यों लगते हैं, और sometime even so different, और कभी कभी so different लगते हैं. These are several related questions are dealt with scientifically in the branch of biology known as genetics. Branch of biology में यही genetics होते हैं. This subject deals the inheritance and the well variation of characters from the parents to offsprings. Inheritance is the process by which characters are passed on from parents to progeny. It is a basis of heredity. Variation is the degree by which progeny different from their parents. Humans know from as early 8,000 to 10,000 before Christ that one of causes of variation was hidden in sexual reproduction. They exploited the variation that were naturally present in the wild population of plant and animals, so selectively breed and select the organism that possessed desirable characters. From example for the artificial selection domination from the ancestral wild cow, we have well known Indian breed Sahiwal cow in पंजाब में एक इंडियन ब्रीड की साहिवाल काऊ है. We must however recognize that thought our ancestors known about the inheritance of characters and variation. They had very little idea about the scientific basis of their phenomena. अब इसमें एक लॉ आएगा, मेंडल्स लॉ इनहेरिटेंस. एक साइंटिस्ट थे ग्रेगोर मेंडल. इन्होंने इनहेरिटेंस के ऊपर रिसर्च करी थी. इनकी रिसर्च 1856 से 1863 तक की थी. उसकी डिटेल इसमें है, और उसमें किस टाइप के कैरेक्टर्स, डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर, 2 टाइप के कैरेक्टर इन लोगों ने फाइंड करे. It was during the mid-19th century that headway was made in the understanding of inheritance. ग्रेगोर मेंडल 19th century में ग्रेगोर मेंडल ने इनहेरिटेंस पे अंडरस्टैंडिंग रिसर्च की थी. कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर 7 years. हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट गार्डन पी पे किया था 7 सालों तक. एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. और प्रपोज किया था इनहेरिटेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे. ड्यूरिंग द मेंडल इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम statistical analysis, mathematical logic were appeared the problem in biology. His experiment had a large sampling size, which gave the greater credibility to the data that he collected. इनके एक्सपेरिमेंट की एक लार्ज सैम्पलिंग साइज है जो ग्रेटर क्रिएटिंग क्रेडिबिलिटी है डाटा जो इन्होंने कलेक्ट किया था. ऑल्सो द confirmation of inference from the experiment on successive generation of his test plant proved that his result pointed to general rules in inheritance rather than being
substantive ideas. Mendel investigation characters in the garden pea plant that were manifested as two opposing traits, tall and dwarf plant. इनके two opposing traits थे, tall plant and dwarf plants. Yellow or green seeds that allowed him to set the basic farm work and rules governing inheritance, which has expanded on by the later scientists to account for all the diverse natural observation and the complexity inheritance in them. Mendel conduct such artificial pollination, क्रॉस pollination. इन्होंने कंडक्ट किया था आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जो क्रॉस पॉलिनेशन था, using several true breeding pea line and true breeding line on that, having undergoes continuous self pollination so that stable trait inheritance and expression of several generation. Mendel select 12 true breeding pea plant varieties. इन्होंने 12 true breeding peas की plant varieties select की थी, as pair were the similar expected from the one character which contrasting traits. Some of the contrasting traits selected were smooth or wrinkled seed. Some contrasted traits थे जो सेलेक्ट किए थे स्मूथ एंड wrinkled seeds के. येलो एंड ग्रीन सीड्स inflated full of contrasted green and yellow pods in the tall and dwarf plants. इसमें इन्होंने 3 टॉल और ड्वार्फ प्लांट्स की भी कलेक्शन की थी. अब इसमें कैरेक्टर है, डोमिनेंट ट्रेड है, रिसेसिव ट्रेड है. सीड शेप था राउंड और व्रिंकल, सीड कलर था येलो और ग्रीन, फ्लावर कलर था वायलेट एंड वाइट, पॉड शेप था फुल एंड कंस्ट्रक्टेड, पॉड कलर था ग्रीन एंड येलो, फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल, स्टेम हाइट थी टॉल और ड्वार्फ. Contrasting traits study by the Mendel in P. Stem height tall और dwarf वही जो ऊपर था हम लोग का. Inheritance of one gene. Let us take the example of one such hybridization experiment carried out by Mendel where the crossed tall and dwarf pea plant in study inheritance of one gene. He collected the seed produced as a result of this cross and grow them into the generate plants of the first hybrid generation. That generation also called the filial progeny of the F1. Mendel observed that all the F1 progeny plants were tall, जिसमें इन्होंने फीलियल प्रोगेनी थी जिसका नाम था F1. अब इन्होंने नोटिस किया था ऑल द F1 प्रोगेनी के जो प्लांट्स थे वो सारे के सारे टॉल थे. लाइक वन इट्स पेरेंट्स नॉन वर ड्राफ्ट. ही मेड सिंपल ऑब्जर्वेशन ऑफ द अदर पेयर मेड द सिमिलर ऑब्जर्वेशन ऑफ द अदर पेयर और ट्रीट. ही फाउंडेड दैट द F1 ऑलवेज रिसेंबल ईदर वन ऑफ द पेरेंट्स एंड दैट trait of the other parent were not seen in them. Mendel then self-pollination of tall F1 plants and to his surprise found that in the filial 2 generation some of the offsprings were dwarf. अब इन्होंने F1 जनरेशन के सरप्राइज हुए थे. इन द फीलियर टू अब F2 जनरेशन में सम ऑफस्प्रिंग्स जो थे वो ड्राफ्ट थे. That characters was not seen in the F1. जो कैरेक्टर F1 में नहीं देखे जाते. Generation was not expressed that the proportion of plants that were draft were the 1/4 of the F2 plant were the 3/4 of the F2 plant. That the tall and dwarf trait were identical to their parental type did not show any blending. That all the offspring were either tall and dwarf, none were in the in-between heights. Similar results were obtained with the other trait that was the study only one of the
parental trait was experienced in the F1 generation, while at the F2 stage, both the trait was experienced of the proportion 3:1. इनका रेशियो आया था 3:1. Contrasting traits did not show the blending of the either F1 or F2 state. Based on this observation, Mendel proposed something were being stable passed down, uncharged from parents of offspring. Thought the gametes were successive generation. He called these things as factor. Now we call them genes. अब इसको genes इसमें सक्सेसिव जनरेशन थी. पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थॉट द गैमेट, जो पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग का गैमेट था वो सक्सेसफुल जनरेशन थी, जो नाउ वी कॉल देम द जीन्स. इन्होंने इसका नाम रखा जीन्स. जीन्स देयर वर द contain the information that require the experience of particles that trait in an organism. Genes were coded for the pair contrasting trait known as the alleles. They are the essentially different formed in the same gene. जो एलील्स थे वो डिफरेंट थे सेम जीन में. अब आगे से हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इस पर हम लोग का अगला लेक्चर होगा. थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड हर हर महादेव.